Hello student, this is Ashish Tripathi from Mount Eta G School Jhansi, computer teacher. Hello, how are you? So after the festivals, first of all I am wishing you the happy Deepavali, belated happy Deepavali. Now please, a message is here, now please attend the online classes that is on Friday and Saturday. Because only few students are attending the online classes. Now I am giving the programming, I am giving the details of the string functions. String functions and method means you pre-prepared function, these are already pre-prepared built-in function that you can use to perform your working. For example, you want to capitalize the first character, you want to capitalize the first character of each word. So, or the first, you want to capitalize the first character of your sentence. So use function string capitalize. String find, this function is used to find out the substring within the string. For example, you have given a string, it goes as a ringa roses and substring is ringa. So you write down the string find sub, 15, 20. So 15 से 22 तक अगर string ringa होगा, it will show you. So find is equal to substring. Now is alpha number, it will check whether your string is containing the alphanumeric values or not. Is alpha, it will check only the alphabetic character. Is digit, it will check only the digits that are present in the string. Now string is lower. Is lower will check whether the given string is in a small letter or not. Is space will check whether you have whatever you have input, it is an empty string or not. Is upper, it will check whatever you have inputted, it is a capital letters or not. If capital, answer true, else false. Similarly, is digit will find out whether you have inputted it is digit or not. Now the next one is is string lower. String lower means whatever you have inputted, it will convert into the lower case. Is lower or lower में difference है. Lower will convert in the lower case. If you have entered in the capital, it will convert in the small letters. If you are writing is upper, string upper, it will convert the string into the upper letters. Means जितने भी small letter होंगे सबके सब converted हो जाएंगे capital letters में. Strip means string के दोनों तरफ जो भी spaces होगा वो remove हो जाएगा. R strip केवल right side का spaces remove होगा. L strip ये केवल लेफ्ट साइड में जो भी स्पेस होंगे उन्हें रिमूव कर देगा. नाउ आर स्ट्रिप फंक्शन का उन्होंने एग्जांपल भी दिया. हेलो से पहले उन्होंने स्पेस दे दिया, फिर आर स्ट्रिप लगाया, तो क्या करेगा, आर स्ट्रिप दोनों साइड के स्पेस को रिमूव कर देगा. इसके अलावा उन्होंने दिया हुआ है, देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है, इज लोअर, इज एक क्वेश्चन लिया हुआ है, एक लाइन इनपुट करने के बाद ये पता करना है कितने कैपिटल लेटर्स हैं, कितने स्मॉल लेटर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, कितने अल्फा काउंट हैं या डिजिट्स. सो सबसे पहले इज लोअर, इट विल काउंट आउट द स्मॉल लेटर्स. इज अपर, इट विल काउंट द capital letters. Is digit, it will count the total number of digits, and is alpha, it will count out the total number of alphabetic characters. In the next program, they are trying to find out the एक string input किया, एक सब string input किया, और ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं that sub string is present in the string or not. For that you can see position equal line comma find comma sub start comma end. Start की वैल्यू 0, एंड की वैल्यू हमने अपनी तरफ से लेंथ ले ली, वहां से फाइंड आउट करता जाएगा. अगर जब तक while में वो कंडीशन ट्रू होती जाएगी इट विल फाइंड आउट. इससे क्या करेगा, काउंट कर लेगा. अब अगर काउंट की वैल्यू 0 से जाता है दैट मीन्स द string the given substring is present, else not. Now let us revise. तो let us revise में आपको मालूम है whatever you have studied in the full chapter that will be displayed. After this chapter I will take the chapter SQL, string query language, क्योंकि मुझे वो एक चैप्टर भी कंप्लीट कराना है. तो SQL एक चैप्टर है जिसके अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर काम होता है. सो in my next 2 classes I will complete the string chapter, and after that I will start the structure query language, that is Oracle, that is the database backend. अभी जो पढ़ रहे हैं that is front end, इसके बाद backend. Thank you. Stay safe, stay home.